Hey. Late. Couple of minutes late, not too bad. It's, audio is good. Audio is good. Couple of minutes late, not too bad. Not the end of the world. So, first innings just finished. Hyderabad was batting, SRH was batting, RCB bowling. Can I pull out the window? Where's the window? There we are. Where's the window? Okay, yeah. So, SRH made it to just over 200. Just basically 200. It was looking tough. Regularly losing wickets. I didn't have them as a shout to even make it to the 180 mark. Normally, you'd think 180 odd is a goodish total. Problem is that the venue is Chinnaswamy. Chinnaswamy is a venue where if you batting first smash 250, then you bowling will give around 240, 250, 260. So it's one of those where it's just a flat track and you just swing for the fences as much as you can. Hyderabad managing to put up 201 for 9. It's a miracle they got here. They got here on the back of three people alone. Travis Head and Abhishek, both of them going off early in the power play. Hell, in the first 3 overs of the power play, there were 3 wickets down for, was it 23 or 30 or something like that? 3 wickets down in the power play in the first half of the power play, in the first 3 overs. Travis Head not making an impact, just 11 of 9. Abhishek Sharma 7 of 8. Run a ball, although he did get a maximum in there. That maximum came in the first over of Jacob Duffy. Jacob playing in place of Josh Hazelwood. Hazelwood not yet cleared to play the IPL games. Same thing with Pat Cummins is missing from the SRH setup. So Ishan is captain. Ishan as captain, wicketkeeper, put up 80 runs of 38. The partnership between him and Henry Klaasen was so crucial because they were 3 down very early on, and if one of them got out quickly as well, team was under pressure. 150 would have been a stretch from there. So although Henry Klaasen, he doesn't like to bat early on, he doesn't like to bat up the order, he doesn't like to be introduced into the game early on. It's just one of those where it wasn't an option. He had to come up. He had to bat out time in the beginning, especially. Ishan Kishan led from the front. Captain's knock, 80 of 38, 210 strike rate. Nitish Reddy, I don't understand why he sent Nitish Reddy that up. I thought maybe Aniket Verma would have come up. But okay, Nitish Reddy flopped. Huge flop. 6 runs, just the 1 ball. 6 balls, just the 1 run. And Henry Klaasen, 31 of 22, just when he was about to, get into his stride, get into his rhythm, he ended up hauling out. Henry Klaasen, just unlucky. 31 of 22 for the man, but the partnership he had with Ishan Kishan, pivotal in the 200 stand that they put up. After Henry Klaasen, Salil Arora, not sure about him. He's a new player for me, so we will learn more about him as the tournament goes on. He got 9 of 6. Aniket Verma, this guy is absolute box office. 43 of 18. He got dropped by Virat on 26. It was sort of a regulation catch for someone of the caliber of Virat, but
Just one of those things where as the ball was getting into his hands, he didn't have a stable base. Ended up fumbling the ball. Harsh Dubey 3 of 3. Harshal Patel 2-ball duck. And David Payne 6 of 5. And Jadav Unadkat 4 of 3. With 6 extras, 4 wides. It's okay, it's not bad. Just 6 extras, it's not bad. No issues with the bowling. Jacob Duffy 4 overs, 22 for 3, and he got Abhishek Sharma and Travis Head out in the second over, in his second over, and in the span of 6 balls, 2 wickets, 2 absolute guns, absolute gun openers for Hyderabad. Even if one of them just stood around, you never know where they can take that total to. Bhuvi 4 overs, 31 for 1 wicket. Bhuvi, I'm not sure if he's still going strong in the domestic format. Sorry, in the domestic circuit, but he looked good. He looked good for someone who's not playing as much cricket as before. He looks good. He had a couple of strays. His line and length sometimes, very rarely, would slip up, but he looked good. He looked strong for the performance that he put up. Abhinandan Singh 3 overs, 38 for 1. Again, not sure about him. He was one of the most expensive, 12.7 the economy. Romario Shepherd 4 overs, 54 for 3 wickets. He's gone for runs, I'll admit, but he's taken key wickets. Romario took where is he? He took Henry Klaasen, he took Aniket Verma, and he took Harsh Dubey. 3 key wickets. Oh, okay, Harsh Dubey, maybe he might have not been as impactful. You never know. Maybe he wouldn't have caused as much damage, but okay, it's fine. But the 2 wickets he took, Aniket Verma and Henry Klaasen, absolute gold dust. Surya Sharma 3 overs, 28, 1 wicket. Kunal 2 overs, 26, no wickets. Kunal was expensive. Kunal was just under the pump. And he was just expensive. The problem here, look at this, the fall of wickets. 2.1 overs, 2.6 overs, 4.2 overs, 13.1 overs. Now that gap from 4.2 overs to 13.1 overs, that's where that partnership was with Henry Klaasen and Ishan Kishan. The innings has just started. I was saying they provided stability. They took wickets out the equation. They just batted time for a bit. When Henry Klaasen came out, they were going at about 7, less than maybe 7 and over. And when Henry Klaasen fell, they were going at around 9.5 and over. So they didn't just bat out time; they converted runs as well. And they were churning out runs continuously. From there, again, after Henry Klaasen fell at 13.1 overs, from there was regular falls of wickets every over: 13.1, 14.3, 15.6, 16.6, 17.5, and 18.6. So regular falls of wickets. It was just that middle phase that gave them some stability to score runs and to score them big. And the power play only put up 46. This is not up to the what should we say, standards. This is not up to the reputation of Hyderabad especially. And then partnership wise, nothing really, but that one from Kishan and Klaasen. 97 runs of 53 balls. That is where they built that body to get to that 200 mark. And that is it for the first innings. The second innings, I do have a stream. Yes.
stream is available. So Full Salt has just gotten a boundary. Full Salt opening with Virat 3 balls into the first over. There's been 2 dot balls, Nitish Reddy opening the bowling. And on the third ball, Full Salt with a late cut gets the boundary. Let me just open up just one thing I need to open up. Are you, will you show? Yes, okay. Alright. So we are set for the full second innings stream. Everything so far is going good. I don't expect to have any interruptions. Certainly not planned interruptions, let's say. Full Salt gets one more away to the ropes. Full Salt gets 2 boundaries in the over, one leg by of the last ball. So at the end of the first over, it's 9 for 1. Salt has got an 8 of 6 with 2 boundaries and a leg by. Virat opening on the other side. Again, never really agreed with this thought of having him open, but it seems everyone is pushing for this. Don't understand why, and probably never will. He's not an opener, he's your number 3 bat. He's the greatest number 3 bat in the game. So why mess with the man? Don't know. Second over being bowled by Jaidev Unadkat. What does he have? Oh, nearly had a wicket. Nearly had a wicket. Nearly had a wicket. Huge swipe. Are they claiming it? Was it grounded or are they claiming it? They're claiming it. They're claiming the wicket. Claiming the wicket. I thought it dropped between the two fielders. Klaasen got trampled by his teammate. Here's the aerial shot. Gets into his hands. Oh yeah, Nitish Reddy just trampling Klaasen. Sheesh, very lucky not to walk away with damage, man. Very lucky not to walk away with damage. Safely mitted. Safely mitted by Henry Klaasen. A man normally has wicket keeper gloves. This time he's just doing it barehanded in the field. Good catch at cover. Good catch at cover. Couldn't really get the read of the ball. Anyone know if it was pace on, pace off? It's Full Salt, so I think ideally want to go pace off to the guy. You are not up to date. Not up to date. Devdat Padikkal walks in. I thought Devdat would be pushed ahead in front of what's his name? Venkatesh Iyer. But then I think Venkatesh Iyer also is thereabouts in the squad. First ball boundary for Devdat Padikkal. First ball 6 over the ropes. So in the domestic tournaments, Devdat also has been in phenomenal touch. There's a lot of guys walking in with a lot of form, with a lot of runs on their back from the domestic circuit. Yeah, left-hander straying down leg and just flicked off the pads. Flicked off the pads. It's a smaller ground, Chinnaswamy.
Second ball, loading more straight onto the pads. Just a single, tip and run, single. I was looking for the pace of the ball, couldn't see it really. Couldn't see the pace of the ball that he bowled, that Jaydev got bowled to to Philip Salt. The strike rate in IPL is 126. Generally, his strike rate has not been an area of concern, so I don't think it'll be an issue today as well. VK first ball, tips it, tip and run, tip and run. Oh, jeez. That collision course, by the way, between Klaasen and Jitesh. Oh, no timing. Dive, but in vain. Henry Klaasen throwing out the dive at covers. Covers on the inner circle. Just far out of his reach. Far out of his reach. Once you beat the infield in the power play, you can almost 90% of the times expect a boundary. Between cover and mid-off. Ooh. Between cover and mid-off. High on the bat than he would have liked. Zip and run. Single of the last. So with 9 coming off the first, 11 comes off the second. A 6 and a boundary. Ooh, this is gonna be a tough one. This is gonna be a tough one for SRH because they as in RCB bats deep. RCB goes so far deep. Okay, yet to bat. So Venkatesh is not in the 11. And Dev comes in as the sub. So that would be for Suyash Sharma then. So Patidar next, then Jitesh, then Tim David, then Shepherd, then Kunal Pandya. So a whole lot of wickets that they need to get through. In T20s, your average batting wise is not really a point of concern. What is a point of concern is your strike rates. You need to have a decent chunk in that strike rate of yours. A whole lot of batting. 154, 157, 173, 213 for Shepherd, and 132 for Kunal Pandya. Huge strike rates. Kunal's is his strike rate is how do we say, is less than his reputation, because he can take games off. He's done it numerous times. He's taken so many games off. Full onto the pads, to the boundary, tickled through fine leg. Jitesh bowling his second over. His second over, the third of the match. Jitesh is under pressure. His first over went for 9. He's gone for 5 runs in the first 2 balls of the second over. A lot of questions. Jitesh, at least this season though, he's going to be used as a genuine out and out all-rounder, because they normally, with the impact rule, again they're forcing this rule, you've lost the
talent, you've lost the uniqueness of all-rounders. You can just sub out players, a specialist for a specialist. So if you're batting first, you go batting heavy, you play an extra batter, and then when you're bowling, just sit the batter out for a specialist bowler. Whether it's spin, pace, that's on you. And what type of spinner as well, that depends on what you have in your squad. Mm, they're going at 10 and over. At 2.3 overs, they're going at 10 and over. So two singles, a boundary, a leg by in the third over from Nitish Reddy. Mhm. RCB having a change of ownership. I'm not sure if the new owners are. I'm not sure if the new owners are in the house. Anushka's there. Anushka's been sitting with some friends. Padikkal with the swipe through covers. Didn't get all of it. Didn't matter. There was no fielder in the deep. No sweepers. Oh, I think they are there. I think the Birlas did show up for the opening match. I just saw a glimpse. Maybe I don't even know how they look facially. I've just seen some pictures on social media. Sixteen of five, Padikkal. 16 of 5. He is taking risks, and there's no downside to him playing aggressively as well. It's the power play. Take your chances. Just clear the infield wherever you aim. 3 done, 33 for 1. Required run rate is where is it? It's at 9.9. So a lot is being said about SRH because they bought the Pakistani player who they bought someone in the 100 competition in England. So there's been a lot of abuse, a lot of negative press, let's say, around the Sunrisers Hyderabad team. People have been attacking players, people have been attacking the owner, Kavya Maran. Who knows? Who knows, man? Who knows what's gonna happen? Maybe they might issue a press release that says that they've released the player, but I doubt it. I doubt it, highly doubt it. David Payne is bowling the fourth over. He's played one day for England. I just saw while I was preparing to come up, I just saw his stats. It was in 22, I think, June, July. He played the one day. Didn't bat. He bowled. He picked up 1 wicket for 38, I want to say. And he, oof. Oh, jeez. Oh, jeez. On the charge. Clearing the stumps, coming slightly down the track. Huge swipe. Huge swipe. To backward point. Deep backward point. Who's that? Is that Aniket Verma on the ropes? He was almost in business. Almost in business.
Just sailed over him. Oh no, it sailed over him with a fair distance. He threw in the jump, but no, it was comfortably over his head. I thought maybe he was in business. Oh, he's on the move this time. He went deeper in the crease, off the back foot, smashing it through mid-wicket. Smashed it through mid-wicket, absolutely clobbered it. He's got 27 of 9, Virat Padikkal. DDP. He's moved outside off stump on this occasion. Stayed on the back foot and just hoiked it through deep mid-wicket. No protection outside. Still power play running. This is the fourth over running in the power play. So they've put a deep square, deep backward, and deep forward square. Sort of. On this occasion, similar type of shot sends it to square, but there's protection, so just a single. 44 for 1 at 3.4. That one wicket, Phil Salt, though, if he's continuing his form from the World Cup, boy oh boy, it's going to be difficult because they have Jacob Bethel. Who they can bring in at 3 or 4, and they push Padikkal up to open with Virat. So Salt, because of his run of form, just because of that. Last year he was instrumental in the opening stands, in the attack from the top that he used to provide. But it just seems he's dry. He's dry on runs this time around. A dot, 6 4 2 singles. Final ball of the fourth. Flicks it up. There shouldn't be protection. Even if there was, it wouldn't matter. It's one more 6. Whew. 18 off David Payne's over. RCB's put up 51 for 1 at the end of 4. 51 for 1 at the end of 4. Hyderabad put up 49 for 3 at the end of 6. Slower ball, just timed it quite well. Stepped out. I don't know what even that shot is called. Stepped out, took it on the toes, took it in the middle of the bat, and just sent it high and over the ropes. He's walked out on a mission, man. 11 balls for 34 runs. How do you stop Virat? And then how do you stop the guys to follow? You need some gold dust overs. Not just 1 or 2. You need a bulk of gold dust overs. Most of the shots, it's not that he's overhit or he's overcommitted. He just watched the ball and played it on its merits, played the shot on its merits. But he's managed to get it in that sweet spot in the bat, that middle spot where he just gets an extra boost. First ball dot, second ball loading. Huge swipe to forward square. VK. VK, you can't be doing this, man. What shot is that? Is that a sweep pull? What is that? Look at that shot.
Eyes wide on the ball. Watching it come onto the bat and watching it leave the bat into the stands. People have gone mad. I'm not a huge fan of this franchise. I'm not a huge fan. People have gone mad over that shot, man. It's a good shot, don't get me wrong. But for me, RCB fans are just so... I don't know if toxic is the right word. I don't enjoy that fan base. I don't. Third ball loading, VK on strike. What does Unat could have? Oh, steps out. Flamingo. Flamingo shot through offside this time. Through the offside. Over, is it between point and cover? Couldn't get elevation. Kept it down off the bat. Gets a 4 on this occasion. This guy. He is the greatest chaser of the game. Guys like him, when they're batting, you just want to watch. There's not much you want to say. Just watch and absorb as much as you can. He's towards his back end of his career. Just want to take it all in. Change of sides for Jaydev. He's going around the wicket. Tried pumping it into the pitch. Slow ball bouncer. Just swatted away for the single. Virat before this over was going at about a run a ball. Devdutt was going at 3 runs per ball. He got 34 of 11. And then 2 shots and Virat is 18 of 10. Striking at 180. Oh, and huge firepower to come, man, by the way. Huge firepower to come. Taking pressure off Devdutt to not just have him smack every ball. Oh, misfield. Misfield from Ishan, man. Poor keeping. Poor keeping. Poor keeping. Already in this over, you being pumped for runs. Bounces. I think it was a slow bounce. Missed the batter, but then Ishan on the bounce to him. Oh, man. Here comes the replay. Pace off. Yeah, he goes pace off, rolling his fingers down. Devdutt tries to swipe it, but just as the ball bounces to Ishan Kishan, it just spins away. Yeah, Henry Klaasen. Yeah, he's pissed. Oh, Henry Klaasen. I would have thought Henry Klaasen would have been keeping and Kishan would be running around in the field. Ooh, into the body. That's good. It'll be a single. They'll take the run, but it's good. It's good bowling. It's a good comeback. He didn't bowl much wrong after the 2 boundaries, but he was let down by Ishan's keeping. How many is that? 1, 2, 16 runs off the over. Oh. So Ishan's just tried to football it back to the wickets. He just tried to kick it back to the wickets, try and get run out induced. Ends up missing the wickets. The ball ends up missing the wickets, hits Virat, and Virat's just giving him a word. Yeah. How many? 67 for 1 after 5. RCB winning the toss, choosing to chase. Oh, they're turning this into a cakewalk. The way that they're going, they're turning this into a cakewalk. You'd expect 10, 13 more runs. So that would be 80 odd runs in the power play. That means they need around about 120 in the remaining 14 overs. So even if they do have a couple of wickets falling in tandem,
It's not going to be the biggest headache for them, RCB chasing wise. Harsh Dubey, 31 matches, 26 wickets, 7 runs, his economy. Going with spin in the last over, not sure it's a wise decision. Spin in the last over when your paces have been pumped. Not sure. He's replacing David Payne. David went for a lot of runs. But do they not have another pacer? First ball. Sweep shot. Beats the infield. Finds the boundary. Couldn't get it on the full to the ropes. Bounce to the ropes. Towards square fine. Yeah, towards fine and deep backward square, that area. It's a good sweep. Good sweep. Good sweep. Even if the ball didn't clear the infield, the positions of the fielders were quite wide. So he was safe. Second ball, almost yoked himself. Yoke a length right on the foot. He stepped out and ended up catching the ball right on his toes. Kept the ball out, take a single, tip and run. Ooh. VK on strike. What's the field set? Deep forward square. And they've got a wideish what? Long, on, off. Wide, long, long, off. That's the two that they've kept out. Everyone else is in. Ends up just being a single. Boundary and 2 singles of the first 3 of this over. Is my stream running behind? Oh, I'm running quite behind. So it was just singles of the rest of the balls. Just 9 came off that over. I'm running quite far behind. What happened over here? Didn't notice I was running that far behind. So at the end of the power play, they do take a timeout. I was running so far behind. This would be at the end of the power play, right? Yeah, they have put up 76. 76 for 1 at the end of 6. It's a strong power play. Strong power play. Thankfully, because I was running behind, we can skip the time for the break. Malinga's bowling first ball pumped it to the ropes. First ball pumped it to the ropes. Just a late cut. Was on his front foot, went on his back. Late cut. Pushes it right in the gap. Yeah, it's just one of those where, as a fielding side, there's not much you can do. Similar shot attempted again, second ball. Fielder in the middle this time. Padikkal's got 46 of 19. Padikkal is on some form. After 6.2, Hyderabad were at 51 for 3 and Bangalore are at 81 for 1. 81 for 1 at the end of 6.2. It's huge. It's huge, absolutely huge.
Third ball loading. Oh, slow bouncer. That's well played. Well bowled. 117 clicks. Well bowled from Malinga. Ishan Malinga. Virat tried to poke some fingers at it. Nothing doing. Thank God Ishan kept it this time. It didn't deceive him on the bounce. Devdutt has. They're just showing a replay package of his boundary hitting. It's just placement. All of it is placement. And his timing hasn't been too far off as well. It's not overdriven. Misfield, they'll push for two. Yeah. 2 runs off the fourth. Misfield in the deep. Able to come back for the second. Henry Klaasen is thinking what we can do. The wheels are turning in his head. The wheels are turning in Ishan Kishan's head. Tata AIG General Insurance Tata fan box. Oh, straight down the ground. What a shot. What a shot. 136 clicks. A round off stump. And he's just played it full-faced. Full-faced, straight bat. Driven it. Lofted drive down the ground. Over the ropes. Get a look at that. Outstanding. 86 meters. 86 meters high. And far. Was it cross seam? What seam was that? Couldn't see the seam. She's absolutely glorious, man. What a shot that was. Required run rates dropped to 8.6. And they're making light work of this. RCB making absolute light work of this. Currently going at 12.88. And required is 8.6. Jeez. Last ball. Can he do something? Tries the bouncer. Virat running down the ground. Nah. He just patted it down. Dot of the last 13 of this over. 13 of the 7th. It's been expensive, man. It's been expensive. Hyderabad are not in this fight. They're not. Hyderabad could call forfeits right now, man. It's not gonna change the outcome of the match. It seems they don't have the pace attack. They don't have the bowlers to get them breakthroughs. Just pray for miss hits, and then you might get in the game. 89 for 1 after 7. That's one-way traffic. One-way traffic. Your required run rate when you're chasing 200 is 10. That required run rate is dropped to, well, now it's with the dot ball, it's 8.69. And they just pulled up the graphic, the Wiggly Worms graphic of the flow of runs with the overs. They've just pulled up that chart, line graph. That worm of RCBs is pulling away, and it's pulling away steeply. Harshal Patel, first over of the match. There was a time he used to play for RCB. There was that one season during COVID. Harshal Patel ended up getting the purple cap. He used to get 2-3 wickets and over all of a sudden. Ended up being called Purple Patel. So yeah. Single of the first. Played it out in the deep point. Just a single. I am falling behind. Second ball.
There's a shout, half a shout of perhaps an edge. Nothing doing from Ishan Kishan. Right, third ball loading. Ooh, swipes it. Fielder, is it? Oh, he's dropped. Henry Klaasen. Henry Klaasen has just dropped VK. Henry Klaasen has just dropped VK. Complete misjudgment. Swiped it. Oh, he was hesitant. He thought the ball would carry to him. Ended up holding station. And then finds out he needs to go in with the dive. Even with the dive, he got the hands there, but just popped out. As he made contact with the ground. Unlucky for the man. They took the single in the middle of that. Devdutt's on strike. Harshal with the fourth ball. Oh, chipped it over the bowler. Is there fielder deep? Nope. To the ropes. 50 for Devdutt. 50 for Devdutt Padikkal. We appreciate. Good effort. We appreciate. Don't tell me that was weak clapping. I was clapping weak on purpose. It's not just me in this room. I have a roommate as well. Can't keep disturbing him. 50 of 21 balls. That is the fastest of this. I think that is the fastest of this edition. Didn't see how fast Ishan got his 50. I forgot to check how fast Ishan got his 50. Oh, Ishan Kishan. Ishan. Misfield from Ishan Kishan. Bowler again, not doing anything wrong. Bowler didn't do anything wrong. It's just Ishan Kishan with the gloves. He's not been on it. Ishan Kishan's not been on it with the gloves. This was a mistake, giving Ishan the gloves. In the Indian, beat it through his legs, Ishan Kishan. That's lazy keeping. Oh, Ishan, you've got to support, man. You're already losing runs, leaking runs. Oh, man. Last ball of the over. Tried to pound it, couldn't. Got to the fielder in the circle, dot ball. 99 after 8. I was saying, Ishan Kishan, normally with the Indian team, he's happy to run around in the field because Sanju will be keeping. And I don't know if you'll agree with me, whoever's watching this either live or later on. I don't know if you'll agree with me in saying that if you have an overseas keeper and he makes your playing 11, he fits the bill for your playing 11, and he's a key personnel, why not just give him the gloves? Why would you have him run around? I don't understand that, unless your domestic keeper keeps for the Indian team and keeps every match for the Indian team, not occasional keeping for the Indian team. We saw it with Jos Buttler and Sanju Samson in Rajasthan. They would sometimes flip and flop, but mostly it would be Sanju Samson keeping, and Jos Buttler would be running around in the field. Now, at that time, Sanju was your mainstay keeper. There was no question in that. But Ishan Kishan can afford to be running around in the field. He should have taken charge in the field that way. Because right now it seems the roles are reversed. Right now, Henry Klaasen is the one going to the bowler, talking to the man, what you want to bowl, what's your plan, putting his arm around the shoulders.
Oh, late cut. Harsh Dubey spinner brought in. First ball single. Late cut from Virat Padikkal. Just missed. Short leg. Short fine leg. Just missed. Short fine leg. Picked out the boundary. Here's the next ball. So one knee. Stand and go down and deliver. I was about to say stand and deliver. Off the knee, just paddled it over. Paddled it over square leg. 11 runs off the first 3 balls. Single, 4 and 6. Fourth ball loading. Stepped out, cleared his wickets, gone big. Oh, Henry. Klaasen. It's taken. Klaasen's got it. Klaasen's got it. Klaasen's got the wicket. Klaasen's got the wicket. हेलो भाई, कहाँ से लाइव कर रहे हो? हेलो डॉक्टर साहब, कैसे हो? बहुत टाइम बाद आए चैनल पे। आई थिंक आईपीएल में आए थे लास्ट। मैं अपने डॉर्मेट्री में बैठ के लाइव कर रहा हूँ। मैं स्टूडेंट हूँ ना, तो डॉम में रहता हूँ। मैं डॉम से लाइव कर रहा हूँ। देवदत्त आउट हो गया डॉक्टर साहब, अगर मैच देख रहे हो तो। बॉल ऊपर ज्यादा गया, दूर ज्यादा नहीं गया। भाई आपको देखने का मन ही नहीं करता। चलो कोई नहीं, मत देखो। सब्सक्राइब कर देना बस। देखना हो नहीं देखना हो वो फिर तुम्हारे ऊपर है। सब्सक्राइब कर देना बस। तो बाकी का ओवर तो शांत गया है। बाकी का ओवर शांत गया है। एक विकेट आया है उसका पेडिकल का। और ज्यादातर डैमेज वही कर रहा था। 111 पे 2। 9 ओवरों के बाद 12.3 का करंट रन रेट चल रहा है। 8.3 का रिक्वायर्ड रन रेट चल रहा है। डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं? डॉक्टर साहब कह रहे हैं ऑलरेडी ब्रो। भाई मैंने सुना है आपने न्यू। नहीं भाई तू। नहीं भैया मैं नहीं हूँ। ये पता नहीं कोई और के उधर चैनल के कमेंट इधर कर रहा है। ये सारे कमेंट मेरे लिए नहीं है भाई। देवदत्त पडिक्कल 61 इन 26 मार के आउट हुआ है। आपस छक्का मारने की कोशिश की, बट इस टाइम कनेक्ट नहीं हुआ। 61 मार के गया है भाई। 200 प्लस का स्ट्राइक रेट बनता है। एंड 220 के अराउंड का बन रहा है शायद। 85% बाउंड्री से आई है उसके रन्स। ओह विराट, छक्का, स्क्वायर लेग के ऊपर, क्रॉस बैट, वो जो स्लैप शॉट टाइप मारता है ना भाई। शीश। पहला बॉल सिंगल था, दूसरा बॉल पे छक्का है। भाई डॉक्टर साहब ये पता नहीं कहना क्या चाह रहे हो। ये शायद किसी और चैनल के कमेंट है, वो इधर कर रहे हो। मैं फेमिलियर नहीं हूँ, क्या कहना चाह रहे हो? ओह,
76 मीटर का छक्का था ये। कौन है? हर्षल पटेल है, हर्षल है। हर्षल डाल रहा है। तीसरा बॉल, 2 रन आते हैं डीप में, उसको पुश किया है। हम्म। 2 सिंगल्स और एक छक्का है 3 बॉल में। देखते हैं बाकी के 3 में कितने आते हैं। विराट स्ट्राइक रेट सिंस आईपीएल 23 में 140 का, 24 में 155 का, और 25 में 145 का। ये पिछले 1-2 साल से ना विराट ने दिमाग ही चेंज कर लिया है कि पहले रिस्की शॉट खेलेंगे, फिर बाद में इनिंग का देख लेंगे। पहले से ही ऑपोजिशन को प्रेशर में डालो रन वाइज। ये विकेट्स इन हैंड वाला सिस्टम अब नहीं चलता T20 में। पहले बॉल से जाना पड़ता है चौका। रजत ने मारा है चौका, बैकवर्ड पॉइंट के थ्रू। सीधा प्लेस ही किया है अगले ने। कोई ओवर हिटिंग, कोई फ्लैम्बॉयंसी, कुछ नहीं, बस प्लेसमेंट ही की है। बैक फुट पे लेट कट। कोई फील्डर नहीं, ना इनफील्ड में ना डीप में। सिंगल आया है। 2 बाउंड्री और 3 सिंगल आया है। अगर उस हिसाब से देखे तो आखिरी बॉल पे बाउंड्री आनी चाहिए। कूल ही है स्ट्राइक पे। आखिरी बॉल 10वीं ओवर का। हैदराबाद इस पॉइंट पे 87 पे था, तीन 3 विकेट डाउन। 87 पे 3 डाउन थे हैदराबाद के। वाइड बॉल, वाइड बॉल, वाइड स्लो बाउंसर की कोशिश कंप्लीटली फेल हुआ है अभी। 12 एक्स्ट्रा हो गए। 10 ओवरों में 12 एक्स्ट्रा हो गए हैदराबाद के। हैदराबाद को बॉलिंग अपनी ठीक करनी पड़ेगी। कोई प्लान अभी तक काम नहीं कर रहा बॉलिंग वाइज। सिंगल आया लास्ट बॉल पे। 126 रन हुए 2 विकेटों के नुकसान पे 10 ओवरों के बाद। 10 ओवर्स के बाद 126। रिक्वायर्ड रन रेट चल रहा है 7.6 का। रेड्डी, नीतीश रेड्डी 2 ओवर 19 रन। उनाटकर 2 ओवर 23 रन, 1 विकेट। डेविड पेन के है 1 ओवर में 18 रन। हर्षल के है 2 ओवरों में 21 रन, 1 विकेट। मलिंगा के 1 ओवर में 13, और हर्षल पटेल के है, अच्छा वो हर्ष था। हर्ष के 2 ओवरों में 21 है, और हर्षल के भी 2 ओवरों में 21 है। लेकिन हर्ष के पास 1 विकेट है। उसका आई थिंक पेडिकल का विकेट आया था। वापस आया है हर्ष। हर्ष दुबे तीसरी ओवर डालने। पहला बॉल सिंगल।
बहुत सारी प्लानिंग चल रही है भाई। आया स्लॉग, 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 काव कॉर्नर के ऊपर स्लॉग, सीधा स्लॉग, छक्का। पेडिकल की तरफ से, सॉरी पेडिकल कह रहा हूँ, पटीदार, पटीदार की तरफ से छक्का, काव कॉर्नर के ऊपर। आई थिंक उसने जो शोकेस में जो कार रखते हैं उसको भी उसको भी नुकसान पहुंचाया है कहीं ना कहीं शायद। ना ना ना, कार को नहीं लगी। वो जो काला वो स्टेज है कार का, उसको लगी है। सेम एरिया। इस टाइम पे उधर फील्डर है तो सिंगल ही होगा। रन पे रन जा रहे हैं भाई, रन पे रन जा रहे हैं। चौका है। चौका है, रन पे रन जा रहे हैं। रन स्टेम, रन का जो फ्लो है आरसीबी की तरफ से, वो हैदराबाद वाले रोक नहीं पा रहे। वाइड, वाइड मलिंगा की तरफ से वाइड। कोई प्लान नहीं है हैदराबाद के पास। कोई ऐसा कोई एक्टिव प्लान नहीं दिख रहा। सवाल आया है, विल आरसीबी रिटेन देयर टाइटल? 46% यस, 45% नो, और 9% मे बी। मुझे नहीं लगता रिटेंशन नहीं होगा। आई डोंट थिंक, आई डोंट थिंक। आवाज आ रही है ना? आवाज तो ठीक है। आवाज उसको बीच बीच में कट जाती होती है। हाँ आवाज तो आ रही है। वो आवाज को पता नहीं क्या है, वो बीच बीच में वो कट हो जाती होती है। और ये माइक जो हेडफोन वाला है वो पता नहीं ढंग से नहीं चल रहा। हम्म, मलिंगा के पास कुछ प्लान है क्या? वो उसने डॉट डाला है अभी वापस। स्लो और वाइड बाउंसर, वाइड बॉल वापस। बहुत ज्यादा शॉट डाल रहा है बाउंसर, बहुत ज्यादा शॉट हो रहे हैं उसके। फील्ड क्या है? लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट और बैक स्क्वायर। ये तो छक्का है, ये तो छक्का है। जैसे निकला बैट से देख के ही पता चल गया छक्का है। उसने दो अटेम्प्ट किए वो स्लोअर बाउंसर्स के, उसकी बात नहीं बनी। तो वही था कि फुल ही डालेगा पैर पे। पटीदार तैयार था उसके लिए। सीधा उठा के घुमा दिया, सीधा स्लॉट में, एकदम स्लॉट एरिया में। ज्यादा स्लो भी नहीं था, मीडियम पेस ही था। ग्राउंड इतना छोटा है कि छक्के तो लगने ही लगने हैं। कितने बॉल बाकी है? 3 बॉल बाकी है, 3 लीगल बॉल बाकी है। वाइड, वाइड। रिव्यू लिया है।
रिव्यू लिया, आई थिंक बॉर्डर लाइन होगा बट वाइड कॉल स्टैंड करेगा। ओह नो, वाइड है, वाइड है, वाइड है, क्लियर वाइड है, ओके। या क्लियर वाइड है, एज भी नहीं लगा तो आउट भी नहीं है। वापस पैड पे, वापस पैड पे डाला, वापस छक्का गया। वो वाइड गिवन था, पोजीशन पे तो पहुंच चुके थे। जैसे वो खत्म हुआ भाग के आया, सीधा पैड पे वापस छक्का। रजत पटीदार के है, रजत के है 10 बॉल में 30 रन, वो भी पेडिकल वाली इनिंग खेल रहा है। सीधा उठा ही दिया। पिच बहुत अच्छी है। ये हैदराबाद वालों को क्या स्ट्रगल हुआ था वो तो वही जाने, शायद ओवर हिट करने गए थे बॉल को, ये कह सकते हैं। पार्टनरशिप 50 की हो गई, 23 बॉल में सिंगल आया है। आखिरी बॉल वो भाग के आ रहा है, छक्के के बाद सिंगल आया था, अब आखिरी बॉल आ रहा है 12वीं ओवर का, भाग के निकला है वाइड। डाउन द ग्राउंड आया है विराट, बट वाइड बॉल, सिग्नल अंपायर के द्वारा। भाई ये कोई प्लान काम नहीं कर रहे हैदराबाद के, कोई प्लान काम नहीं कर रहे। हैदराबाद फिनिश करेगी लास्ट ऐसा लग रहा है पॉइंट्स टेबल में, जैसा स्टार्ट इन्होंने लिया है। स्लोअर वन, ये सिंगल आया लास्ट बॉल पे, सिंगल आया लास्ट बॉल पे। 162 फुटू 12 ओवरों के बाद 40 रन चाहिए जीतने को। 40 runs needed to win। डेविड पेन को दे रहे वापस, स्मृति मंदाना आई है, श्रियंका पाटिल आई है, आई थिंक तो बिरलास भी आया है, अनन्या बिरला आया है शायद। ये जब से न्यूज़ निकला है ना कि बिरला ने खरीदा है आरसीबी को, वो मैंने पहली बार उसका फेस देखा है, अनन्या बिरला का। मुझे तो पता भी नहीं है वो कौन थी कौन है। 13.5 का करंट रन रेट चल रहा है, रिक्वायर्ड 5 का है। पहला बॉल सिंगल, ये डेविड पेन के पहले ओवर में 18 रन आए थे। पहला बॉल सिंगल था, दूसरा बॉल हाइट ज्यादा है, ओ आउट, आउट आउट आउट। वो पिक्चर फ्रीज हो गया, पिक्चर फ्रीज हो गया, आउट है या नहीं है। दिनेश कार्तिक आ गया, आउट 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 आउट। विकेट 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 ऑफ रजत पटीदार। वाइड लाइन एंगल, बट क्योंकि ये लेफ्टी है और वो राइटी को डाल रहा है, वाइड लाइन काफी आसान होता है रेप्लिकेट करना।
सेम चीज जो पेडिकल के साथ हुई थी, बहुत ज्यादा हाइट और डिस्टेंस कुछ नहीं। 31 करके जा रहा है 12 बॉल में, लगभग 260 का स्ट्राइक रेट बन रहा है, लगभग लगभग। पटीदार का तबाही तबाही करके जा रहे हैं ये लोग। अरे स्ट्रीम बंद होगी, आ गई। चलो स्ट्रीम आ गई, स्ट्रीम आ गई। ज्यादा कुछ मिस नहीं हुआ, बस ये जितेश आया है, क्रीज पे कार्ड ले रहा है जितेश। नो, अभी ऐसे ही है। जितेश ने भी पिछले साल इतने मैच निकाले हैं ना आरसीबी के लिए, ऐसे ऐसे पोजीशन में आके ऐसे ऐसे इनिंग्स उसने खेली है। शीश। पहला बॉल जितेश का, आउट। आउट। दो में दो, दो में दो, दो में दो, दो में दो, आउट। जितेश इज आउट। कोई देखना नहीं पिच क्या कर रही है, बॉल क्या कर रहा है, सीधा आगे घुमाओ और आउट हो गया। अराउंड डीप फाइन किट, कहाँ पे है, डीप फाइन ही कह लेते हैं। दो में दो, डेविड पेन के। फर्स्ट बॉल डक जितेश का। इस साल के कैंपेन को किक ऑफ करते हुए जितेश, 39 रन्स चाहिए 45 बॉल्स में, 4 विकेट्स डाउन है अब आरसीबी। हैट्रिक बॉल लोड हो रहा है, टिम डेविड क्रीज पे आ रहा है, आ रहा है। सब अपने मार्क पे। डेविड पेन आया, ये डाला बॉल, ये ब्लॉक किया, ये डॉट बॉल। डॉट बॉल, नो हैट्रिक, नो सक्सेसफुल हैट्रिक। पहला वाला फुल डिलीवरी वाइड लाइन पे, जीते वो पटीदार को फोर्स किया कि रीच कर बॉल के लिए, और उसके चक्कर में टाइमिंग नहीं हुई, प्लेसमेंट नहीं निकला बैट से। जो दूसरा विकेट था जितेश का, शॉर्ट बॉल इनटू द बॉडी। दोनों अलग अलग एग्जीक्यूशंस, दोनों सेम रिजल्ट्स डेविड के लिए। सिंगल, दो विकेट, दो डॉट, लास्ट बॉल लोडिंग। ओ सिंगल, पैड पे था, बस पुश ही किया है सिंगल के लिए। 164 फॉर 4, 13 ओवरों के बाद। 38 रन और चाहिए, बस 38 रन चाहिए। टिम डेविड के बाद रोमारियो शेफर्ड और कुणाल पांड्या अभी भी बैठे हैं डगआउट में, दोनों सर्टिफाइड। दोनों सर्टिफाइड फिनिशर्स बैठे हैं डगआउट में। उनाट का तीसरी ओवर के लिए
2 ओवरों में 23 रन है उसके, 1 विकेट लिया है, तीसरी ओवर डालने आ रहा है। लेट्स सी व्हाट कोहली कैन डू। देखते हैं कोहली क्या कर सकता है। सिंगल, 2 बॉल 2 सिंगल। सियरा सुपर स्ट्राइकर्स, पटीदार, अनिकेत वर्मा, पेडिकल, ईशान किशान और विराट, सबके 200 के ऊपर के स्ट्राइक रेट है सिवाय विराट के। विराट का 162 का है, पटीदार का 258 का है, लगभग 260 का स्ट्राइक रेट है अगले का। दो सिंगल आए, 36 रन्स और चाहिए। डेविड, टिम और कोहली विराट खेल रहे। फील्ड चेंजेस, 1 2 बंदे ऊपर नीचे। तीसरा बॉल, क्या कह रहा है तीसरा बॉल? ओह, जस्ट सिंगल। ये पता नहीं क्या चल रहा है, स्ट्रीम लैग हो रही है। 3 सिंगल आए हैं इस ओवर में। जयदेव नॉट कट के, विराट खड़ा है स्ट्राइक पे चौथी बॉल के लिए। ये अटक क्यों गई? अरे स्ट्रीम फेल्ड। भाई ये दिक्कतें एक तो बड़ी चलती है, स्ट्रीम जब फेल हो जाती है ना। कहाँ पे मिलेगी नई स्ट्रीम? स्ट्रीम स्ट्रीम स्ट्रीम, नो 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 नो। क्रिकेट स्ट्रीम्स नहीं है क्या? फुटबॉल, रग्बी, SRH RCB, SRH and RCB। शांत ओवर गया है जयदेव नाटकट का, शांत ओवर गया है। लास्ट बॉल पे वाइड दिया है, रिव्यू किया गया है SRH के द्वारा। आखिरी रिव्यू है, वो भी यूज कर रहे हैं वाइड, वाइड को चेक करने के लिए। ये हालत हो गई है हैदराबाद की। साइड ऑन एंगल आ रहा है, टिम डेविड तो क्रीज में ही है। हेड एंड शोल्डर्स, वाइड है, वाइड है, ओवर हेड हाई। या हाँ, ओवर हेड हाई है तो वाइड है, वाइड कॉल स्टैंड करेगा। 2 रिव्यू लिया है वाइड कॉल चेक करने के लिए, दोनों बर्बाद हुए हैं।
लास्ट बॉल पे सिंगल आया है। 6 बॉल में 6 रन ही आए। अच्छी ओवर डाली है जयदेव ने, अच्छी ओवर डाली है। 32 रन और चाहिए। लास्ट के जो 6 ओवर है उसमें 32 रन चाहिए। दिक्कत यह है कि अब एसआरएच ने थोड़ा अच्छा खासा पुल बैक किया हुआ है। जब वो 2 विकेटें आई ना डेविड पेन से, अच्छा खासा उन्होंने पुल बैक किया हुआ है। वरुण एरन भी है क्या कोचिंग स्टाफ में? अच्छा। डैनियल विटोरी, मुरली, वरुण एरन, सारे आए हैं। सारे अब गेम प्लान डिस्कस करेंगे टाइम आउट ब्रेक में। अब कम बैक तो अच्छा कर लिया है। एक टाइम पे लग रहा था कि 15-16 ओवरों में मैच खत्म हो जाएगा। पुल बैक अच्छा किया हुआ है। अब देखते हैं अगर ये जो बाकी के बॉलर्स है ये प्रेशर मेंटेन कर पाए कि नहीं कर पाए। ड्रिंक्स ब्रेक 170 पे 4 है ड्रिंक्स पे। हाइलाइट्स चल रही है। दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि हैदराबाद के पास बॉलर्स नहीं है। हैदराबाद के पास बॉलर्स नहीं है, बॉलिंग डेप्थ नहीं है। जयदेव उनादकट ही है, हर्षल पटेल ही है कुछ हद तक। दोनों दोनों अब दिक्कत ये है कि दोनों को लीड बॉलर नहीं कह सकते। सपोर्ट बॉलर कह सकते हो, लीड बॉलर को लीड बॉलर की सपोर्ट बॉलर कह सकते हो। बट अब दोनों को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। दोनों को अब बड़े रोल्स करने पड़ेंगे अपनी टीम के लिए। मलिंगा बहुत महंगा रहा है। डेविड पेन डालेगा ड्रिंक्स के बाद की पहली ओवर। ड्रिंक्स के बाद की पहली ओवर। हिंदी देख लेना, सेंस बन रहा है नहीं बन रहा। या स्ट्रीम, ये दिक्कत बड़ी आती है भाई जब स्ट्रीम क्रैश होती हो ना, मज़ा नहीं आता फिर देखने का। अगर कोई देख रहा है ये स्ट्रीम और इस पॉइंट तक पहुंचा है तो मेरा एक सवाल है कि तुम मैच कहाँ से देख रहे हो? कोई वो लेके रखा है चैनल का, सब्सक्रिप्शन लेके रखा है कि ऑनलाइन कहीं से स्ट्रीम करते हो, कैसे देखते हो? ये बता देना एक बार ज़रूर। स्ट्रीम्स आर फेलिंग। जो अभी एक स्ट्रीम चल रही है वो लगभग 3-4 मिनट पीछे पीछे चल रही है। उसमें तो वहीं पे पहुंचे है, जो ड्रिंक्स ब्रेक है वहां तक ही पहुंचे है उसमें। यहाँ पे ट्राई करते हैं अगर छोटी स्क्रीन पे कुछ चल जाए, कुछ भी दिख जाए इस टाइम पे तो। विराट के 50 हो गए। 50 कंप्लीट फॉर मिस्टर विराट कोहली। 50 complete for Mr. Virat Kohli.
अनफॉर्चुनेटली वापस बंद हो गया। स्ट्रीम बंद हो गई, वापस वापस से बंद हो गई। बस एक ही वो ग्लिम्स एक मिला था कि विराट के 50 हो गए थे, 2 सिंगल आए थे पहली 2 बॉल्स में, और आई थिंक थर्ड बॉल पे एक बाउंड्री आई थी। नॉट श्योर उसके बाद कुछ हुआ हो या ना हुआ हो। लोडिंग लोडिंग स्क्रीन्स 3 टैब खोल के रखी है, तीनों में लोडिंग का वो सिंबल आ रहा है। कहीं पे कुछ चल नहीं रहा, कुछ डिस्प्ले नहीं हो रहा। 3 टैब्स इधर खोली है और एक छोटी टैब यहाँ पे खोली है, कोई साथ नहीं दे रही। वेट करते हैं। 19 runs needed of 32 बाउंड्रीज। कहाँ पे है तो? टिम डेविड 2 सिंगल आया है, दूसरे सिंगल पे विराट ने 50 कंप्लीट किए 33 बॉल में। फिर टिम डेविड ने 2 बाउंड्रीज मारी है, एक चौका आया, एक वाइड आया, एक छक्का आया, एक सिंगल आया, और लास्ट बॉल पे वापस एक सिंगल आता है। यस, लास्ट बॉल पे मैं पहुंच चुका हूँ। 15 ओवर्स के बाद 185 पे 4, 17 रन और चाहिए यहाँ से। 17 रन और चाहिए है यहाँ से आरसीबी को जीतने के लिए अपना पहला मैच इस वाले आईपीएल एडिशन का। कौन डाल रहा है? हर्षल पटेल डाल रहा है, मार्क पे आ चुका है, भाग के आ रहा है। फर्स्ट बॉल ये डाली और ये उड़ी डाउन द ग्राउंड स्लॉग। ये तो सिर्फ स्टैंड एंड डिलीवर स्लॉग मारा है विराट कोहली ने हर्षल पटेल को। 128 क्लिक्स, मीडियम पेस से थोड़ा कम, कंप्लीटली स्लॉट लेंथ में। छक्का आ गया, 17 रन चाहिए जीतने को, छक्का आ गया, अब 11 रन चाहिए। सीधा ऊपर मारा है। शॉर्ट बॉल, ओ चौका, शायद ग्लव से निकला है, शायद शायद ग्लव से निकला है। ग्लव से निकल के कीपर के ऊपर गया है। चौका आ गया, 10 रन आ गए, 10 रन आ गए 17 में से 7 रन चाहिए जीतने को। वो फ्लेमिंगो शॉट, एक पैर हवा में एक पैर नीचे और कवर ड्राइव, एक और चौका। 14 रन आ गए 3 बॉल में। चेज मास्टर फॉर ए रीजन, चेज मास्टर फॉर ए रीजन, द ग्रेटेस्ट चेजिंग बैट्समैन in the whole of cricketing history.
तो कवर पे कोई बार नहीं था। एक कवर पॉइंट था, उसको बीट करना था मैक्सिमम। फोर्थ बॉल, लेट कट, स्क्वायर थर्ड के थ्रू। मैच इज ओवर। खत्म, मैच खत्म। खत्म हो लिया। इन पे है नहीं, ये हैदराबाद वालों पे है नहीं। 69 रन्स 38 बॉल में। टिम डेविड के 16 रन है 10 बॉल में। और क्या स्टार्ट लिया है आरसीबी ने। 4.2 ओवर्स अभी भी बचते हैं। 4.2 ओवर्स बचते हैं यहाँ से। फास्टेस्ट रन चेज, चेसिंग 200 प्लस टोटल्स। फास्टेस्ट रन चेज। क्या इनिंग खेली है विराट ने, क्या इनिंग खेली है। अनुष्का शर्मा आ गई। विराट के चक्कर में अनुष्का शर्मा आ गई। क्या चेज हुआ है, क्या चेज हुआ है, व्हाट अ चेज, व्हाट ए चेज। एसआरएच को लगने ही नहीं दिया गेम में। बस वो जो बीच में 2-3 ओवर थे ना, जहाँ पे आम, उसने पेन ने 2 विकेटें ली, और उसके 1-2 ओवर, एक आध ओवर उसके बाद का, उसके पहले का, उसके अलावा तो हाथ ही नहीं लगने दिया आरसीबी वालों ने। विराट का एक ही रोल है, पूरी इनिंग खेलो, एंकर करो, और अगले बंदे से प्रेशर हटाओ बाउंड्री का। अगले बंदे को प्रेशर में मत डालना कि वो, उसको मारना ही पड़ेगा। खुद रिस्क लो, लेकिन सेंसिबल रिस्क लो। क्या, क्या इनिंग खेली है विराट ने, क्या इनिंग खेली है। आउटस्टैंडिंग। चलो इस पे आ जाते हैं। टोटल कितना है दिख रहा है। चलो ये ठीक है। आरसीबी 203 सक्सेसफुली चेस्ड इन 15.4 ओवर्स। फिल सॉल्ट वर्ल्ड कप का फॉर्म कैरी करता हुआ 8 रन 7 बॉल में। विराट कोहली के 68 है 38 बॉल में। ये इसने एंकर की है इनिंग्स, विराट ने प्योरली एंकर की है। सामने सबका प्लान यही था, आके मारो, सारे बॉल मारो, 200 200 के स्ट्राइक रेट से मारो। विराट का यही था, एक एंड पकड़ के खेलो, जब मार पाओ तब मारो, या प्रेशर मत बनने दो अगले बंदे पे, सिंगल डबल लेते रहो। विराट का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ ये है, जब बाउंड्रीज नहीं आती तब वो कन्वर्ट जो करता है सिंगल्स को डबल्स में, वो उसकी जो ये वाली एबिलिटी है, अनमैच्ड, अनमैच्ड। विराट नॉट आउट 69 38 बॉल में। पेडिकल के पेडिकल के 61 है 26 बॉल्स में। उसका स्ट्राइक रेट देखो पेडिकल का 234। रजत के 31 रन 12 बॉल में, उसका 258 का स्ट्राइक रेट बनता है। जितेश फर्स्ट बॉल तक, वो सिंपल गेम प्लान है, बाकी सारे खो देंगे, बाकी सारे ठोकेंगे, विराट देखेगा। सिंपल गेम प्लान है आरसीबी का। टिम डेविड 16 रन 10 बॉल में, 160 का स्ट्राइक रेट है टिम डेविड का।
अगर यहाँ पे किसी ने लेट डाउन किया ना बैटिंग वाइज, तो सिर्फ फिल सॉल्ट ने किया है। स्ट्राइक रेट वाइज जल्दी आउट हो जाता, कोई इश्यू नहीं, 7 बॉल लिया है, चलो ठीक है। वो 15 ओवर, 15 ओवर में चेस कर लिए, ठीक है। अगर एंड तक चला जाता तो फिल सॉल्ट ही होता ब्लेम करने लायक। एक्स्ट्रास कोई बॉलिंग प्लान काम नहीं करा हैदराबाद का। कोई बॉलिंग प्लान काम नहीं करा, कोई एग्जीक्यूशन नहीं था ऑन पॉइंट। प्लस ईशान किशन ने भी बहुत रन्स जाने दिए। 9 रन है बाई के, 2 रन है लेग बाई के, 7 रन है वाइड के। टोटल 18 रन हो गए एक्स्ट्रास में। बॉलिंग में देखते हैं, नीतीश रेड्डी 2 ओवर 19 रन, नो विकेट। जयदेव 3 ओवर 29 रन, 1 विकेट। उसने हालांकि उसने पावर प्ले में 2 ओवरें डाली थी। 2 ओवरों में 23 रन थे। उसने ठीक ठीक डाला था पावर प्ले के हिसाब से। ऐसा इतना कोई खराब नहीं था उसका लाइन एंड लेंथ। फिर उसने अभी एक डाला, 1 ओवर, आई थिंक उसमें 6 या 7 रन ही आए। ये हर्षल पटेल वाले ओवर से पहले। तो उसकी बॉलिंग ज़्यादा ख़राब नहीं थी जयदेव उनादकट की। उसके 9.7 का इकोनॉमी बैठता है, कोई इशू नहीं है। डेविड पेन इसने मैच बनाई थी बीच में, हालांकि शुरू में बहुत महंगा साबित हुआ था। पहले ओवर में ही उसके 18 कुछ रन आ गए थे, और फिर बाकी के 2 ओवरों में उसके आए हैं 16 रन। और पहला ओवर बहुत महंगा था डेविड पेन का, 3 ओवरों में 35 है, 2 विकेटें ली है उसने। इकोनॉमी बैठ रहा है 11.7 का। हर्ष दुबे 3 ओवर 35 रन और 1 विकेट है हर्ष दुबे का। और एहसान मलिंगा 2 ओवर 35 रन। ये भाई इसका दिन नहीं था। एक कुछ भी ट्राई करे, बाउंड्री के लिए ही जा रहा था, या तो वाइड बॉल डिक्लेयर हो रहा था। उसकी एफर्ट्स, इसका दिन ही नहीं था एहसान मलिंगा का। फिर हर्षभ पटेल 2.4 ओवर 39 रन, 0 विकेट्स। हर्षभ पटेल का पता नहीं क्या, वो बीच में उसका ऐसे ही हवा बन गया था जब उसको अचानक से विकेटें मिल गई थी, पर्पल पटेल ये सब। बट ठीक है, हर्षल पटेल ठीक है। फॉल ऑफ विकेट ये तो क्या कहते हैं, ज़्यादा इंटरवल्स में थे नहीं, बस बीच में रजत और जितेश बैक टू बैक आउट हुए थे, वरना तो फुल टाइम विकेट्स इन हैंड थे आरसीबी के। मैंडेटरी जो है पावर प्ले 6 ओवरों का, जिसमें फील्डिंग रिस्ट्रिक्शंस है, 76 रन्स, कंपेयर टू हैदराबाद के 49 रन्स। और 3 विकेट बाय द वे हैदराबाद के, आरसीबी के जस्ट एक ही था, एक ही विकेट था। ये पार्टनरशिप देखो, विराट एंड देवदत्त की 101 की पार्टनरशिप 45 बॉल्स में। रजत और विराट की 53 रन्स 22 बॉल्स में। और फिर एंड में 40 रन्स 19 बॉल में विराट और टिम डेविड की पार्टनरशिप। तो कहीं हाथ पैर लगने लगने ही नहीं दिए हैदराबाद के आरसीबी वालों ने। बस एक वो फिलिप सॉल्ट था, अगर क्या पता वो लंबा खेल जाता, रन बॉल कर जाता, 20 में 20, 30 में 30, ऐसा कुछ, तो कुछ बात बनती हैदराबाद की, जिस हिसाब से उसका फॉर्म है। हालांकि वो अगर 20-30 बॉल खेल जाता तो वो रन बॉल तो नहीं खेलता, इतनी बात तो फिक्स्ड है। तो बस अब ठीक है, कंप्लीट वन साइड डोमिनेशन है ये हैदराबाद की, सॉरी हैदराबाद कह रहा हूँ, आरसीबी की तरफ से। कंप्लीट 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 वन साइड डोमिनेशन है। अब कल पता नहीं किसका मैच है, तो उस पर बात नहीं करेंगे। पॉइंट टेबल देखने का कोई फायदा है नहीं, आरसीबी टॉप पे है क्योंकि ये पहला मैच है और यही जीते है। अभी टाइम क्या बज रहा है, दो, तो अभी 1 घंटे में वापस आऊंगा लाइव मोटो जीपी को लेके। तो मिलते हैं 2 घंटे बाद। अगर मोटो जीपी का कोई फैन नहीं है और बस यही तक देखोगे तो भी कोई इश्यू नहीं है। आईपीएल का यही लाइव था। अगला लाइव में स्पॉट ही चेंज हो रहा है। तो
साइन ऑफ करते हैं। याद रखिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें अगर करना हो तो। लेकिन मुझे लाइक्स और सब्सक्राइब्स चाहिए, मुझे चैनल ग्रो करना है। अगर फ्री टाइम हो तो बस ये दो बटन दबा देना अगर फ्री टाइम हो तो। मिलते हैं अभी कुछ घंटों के बाद। सी यू।